Good evening, students. Today I am going to teach you what is an electric dipole and what is the importance of it in our everyday life. Electric dipole, in terms of definition, is very simple. Like if two equal and opposite charges separated by a very small distance in space, they constitute an electric dipole. The dipole meaning है कौन? जेतबेले दुईटा equal and opposite charge space रे very small distance apart रे थांती ताले ए सिस्टम टा को हम कहबा गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल. ताले आर इंपोर्टेंस कोन जानिबा कोन दरकार. आ पिला माने केमिस्ट्री रे 11th रे तमे गोटे जिंस पढी आसीथिबो सब गोले पढिबो भी polar and non polar molecules. Polar molecule and non polar molecules. Like one example, water is a polar molecule. ताले polar molecule को और non polar molecule को हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमें डिफाइन कर पारे तांका भितरे डिस्टिंक्शन कर परिबा. ताले polar molecule पछरे फिजिक्स रो रीजन हला दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. कोन जिंसटा usually if you take any molecule, let's say water molecule is electrically neutral. Water molecule is electrically neutral. केमती ना suppose consider करो गोटे water molecule गोटे oxygen दीटा hydrogen. Oxygen रो atomic number हला 8, hydrogen रो 1. तमाने total number of electron is oxygen रो 8, dita hydrogen जेतु 2, 8 plus 2 10. Total number of proton 10. ताले total number of positive charge जहाँ रहिला गोटे hydrogen गोटे water molecule रे total negative charge भी सेया रहिला. तामाने बाहर जदि हम देखियो सपोज इटा ला गोटे water molecule आमे तार बाहर जदि देखिबा ताले it is electrically neutral. But the important feature here एटी कोन हुए ना देखो तुम्हारा मने थी 11th क्लास रे हम पढ़िथिले सेंटर ऑफ मास. इन दिस केस आमे पोलर मॉलिक्यूल को डिफाइन करिया पई हेले वी मस्ट नो टू important points. One is center of positive charge and center of negative charge. Just किछ समय आगु हम कहली वाटर मॉलिक्यूल रे जति की पॉजिटिव चार्ज जति की नेगेटिव चार्ज अछि. त देखो आमे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको कहूची सबुतक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रे रहंती, नेगेटिव चार्ज गुरा न्यूक्लियस रो चारि पटे घुरी बुलंती. गोटे एटम रो सेंटर रे सबतक पॉजिटिव चार्ज होंती माने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रो चारि पटे घुरी बुलंती. तने इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन फिक्स नाही. बट आमे जतो गोटे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रो देखुचे गोटे छोटो मॉलिक्यूल को बा एटम को, सो इन दैट केस वी कैन थिंक ऑफ as if there is a point where entire positive charge is supposed to be concentrated and there is another point where the entire negative charge is supposed to be concentrated. जो पॉइंट टाको हमें नहीं परिबा जोटी की सबुतक पॉजिटिव चार्ज मानकर सेंटर आउ गोटे पॉइंट नहीं परिबा जोटा की सबुतक नेगेटिव चार्ज मानकर सेंटर, सेटा को कहा जाए पॉजिटिव चार्ज रो सेंटर आउ गोटे कहला नेगेटिव चार्ज रो सेंटर. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. एटा हमें कहले फाइन बिकॉज़ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सेम कांसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मॉलिक्यूल केस रे भी से आही परियो. त इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोन हुए ना सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पेस रे गोटे पॉइंट रे नथांती. सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भितर सेपरेशन रहला. वाटर मॉलिक्यूल केस रे कोन हुए ना यार चार्ज ही गला +10e, यार चार्ज ही गला -10e बिकॉज़ आ भितर टोटल वाटर मॉलिक्यूल रे कोन ना गोटे वाटर मॉलिक्यूल रे 10 टा इलेक्ट्रॉन थाए 10 टा प्रोटॉन थाए. सेति पे मु जो पॉजिटिव चार्ज नेली ताको कर देली +10e, एटा को नेगली -10e. वाटर मॉलिक्यूल टा पोलर माने पोलर एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल रे कोन हुए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भितर किछि गैप थाए. सो देयर इज ए गैप. ताले माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रे कोन हे गला ना सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हे गला, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज separated by a very small distance.
ताले सिस्टम को हमें कहबा इट इज ए डाइपोल or water molecule is polar. Water molecule is polar. ताले एठी हम जानि गले polar molecule और electric dipole भितर कोन लिंक non polar molecule केस रे कोन हुए ना पॉजिटिव चार्ज रो सेंटर और नेगेटिव चार्ज रो सेंटर गोटाय पॉइंट रे थाए तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर इज नो सेपरेशन सेति पय एटा को हम कहि परिबा non polar molecules ताले इन सिंपल वर्ड हमें कहि परिबा जे पोलर मॉलिक्यूल माने तांको नेचर से माने गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल भला बिहेव करंती whereas a non polar molecule they do not behave like an electric dipole. So this is the basic difference. मन रखता for every dipole we can define a physical quantity that is called dipole moment. The symbol of dipole moment is P and it is given by the magnitude of either charge. Magnitude of either charge is Q and the separation distance between the two charges. So let us take it to be L. Dira charge भितर केते separation अछि सेटा हला L. Dipole moment रो definition हला that is P is equal to Q. Q टा कोन the magnitude of any of the charge Q into the distance between them. So Q into L. And remember this dipole moment it is a vector quantity. It's a vector quantity. त जदि vector quantity हला तले आरो डायरेक्शन थिबो मन रखिता पिला माने dipole moment रो डायरेक्शन हला from negative charge to positive charge. तले एटी नेगेटिव चार्ज कोठी अछि एटी पॉजिटिव चार्ज रहला एटी तले dipole moment रो डायरेक्शन हला हम दिला का चार्ज को जॉइन कर दवा then the direction would be from negative to positive. So this is the direction of dipole moment and whose magnitude is this much. Then we will go for the importance of electric dipole. Out the importance feature कौन हमें एटी बुझिले what is dipole moment. अच्छा बुझिले कौन polar molecule और non polar molecule. मन रखो जो माने polar हितिबे जो molecule polar molecule हितिबे सेमानकर गोटे डाइपोल मोमेंट थिबो बिकॉज़ प्रत्येक डाइपोल रो डाइपोल मोमेंट रहउची ताले नॉन पोलर मॉलिक्यूल मानकर डाइपोल मोमेंट रहिबनी पोलर मॉलिक्यूल मानकर डाइपोल मोमेंट रहिबो इट इज स्पेशलिटी हला कोन ना वाटर ता जेतु पोलर आ तार डाइपोल मोमेंट रहे आमे किछि नेक्स्ट डेरिवेशंस रे आमे देखिबा नेक्स्ट चैप्टर रे आमे देखिबा जे जदी इवन गोटे स्मॉल डाइपोल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल रे गोटे डाइपोल टे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे जोटा कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रे तार इंपोर्टेंस बहुत अधिक सेति पय मन रखिता मैक्सिमम वाटर इज अ हमर कहंती इट्स अ गुड सॉल्वेंट वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज़ ऑफ इट्स पोलर नेचर थैंक यू